Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So let's start our today's class. Today we are going to learn a new concept of English grammar, that is the sentence. Okay, lesson 25, the sentence. So what are sentence? What is sentence? The group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay. The group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay, let us learn with the help of some examples. See the first example. In the is she kitchen. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है in the is she kitchen. So ये सेंटेंस का मीन आपको समझ आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है? ये सेंटेंस कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस में, है ना? क्या लिखा है मैंने? In the is she kitchen. So आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना? क्यों? The group of words does not make sense because the words are not in order. क्योंकि जो वर्ड्स है ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है. ओके, नाउ अब मैं इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखती हूँ. ओके, सो फर्स्ट शी इज इन द kitchen. ओके, शी इज इन द किचन. सो ये क्या हुआ है? कंप्लीट सेंटेंस हो गया. अब ये सेंटेंस का सेंस भी है, हमें समझ भी आ रहा है कि क्या लिखा है. शी इज इन द किचन मीन्स वो किचन में है. ओके, अंडरस्टूड? अ सेंटेंस begins with the capital letter and end with the punctuation mark or full stop. ओके, punctuation mark और full stop एक ही होता है. ओके, a sentence, जब भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जब एंड होगा तो वो किससे होगा? फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क. ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल सी. हैज अ रेखा डॉल. सो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि ये वर्ड से ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं है. नाउ वी विल राइट रेखा has a doll. रेखा के पास डॉल है. रेखा has a doll. Okay, understood? Next example. My this is dog. Proper ही है. So this is my dog. Okay. Next example. Watching their TV. So they are watching TV. Is raining, it's heavily. So it is raining heavily. Next is dancing peacock the. So how do we write in proper order? The peacock is dancing. Okay, understood now? Sentence, what is sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay, the group of words that makes a complete sense is called a sentence. Okay, a sentence begins with capital letter and end with punctuation mark or full stop. है
punctuation mark or full stop. Okay, understood? So